Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period, and for today our topic is HCF. HCF stands for H for highest, C for common and F for factor. Highest common factor. Now class, this is your C work and you have to do this work on your sheets. And it's page number 38, question number 5, A and B part. Write the HCF of the following pairs of numbers. And question A is, part A is 32 and 24. So students, HCF, as from name, highest common factor, it means first we have to write down the factors of both the numbers, and then we have to look for the common factors. Common means which is same in both the factors of the numbers. Okay, then we have to look for the highest common factor, means कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट नंबर होगा, सबसे ग्रेटर नंबर होगा, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF है. Now the first step is we have to write down the factors of the given numbers. So here we have the factors of 32, 1, 2, 4, 8, 16 and 32. As 32 is these numbers are the factors of 32 because 32 is multiple of these numbers. Okay, 32 इन नंबर्स का मल्टीपल है, सो ये नंबर्स 32 के फैक्टर्स हैं. क्लियर. फिर 24 के इसी तरह हम फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे. 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स हमने देखने हैं. फर्स्ट में भी 1 है और फैक्टर्स ऑफ 24 में भी 1 है. इट मीन्स ये कॉमन है. हम इसका लूप बना लेंगे. हमने इसका लूप बना लिया है. सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ 32 में भी 2 है और फैक्टर्स ऑफ 24 में भी 2 है. अगेन हम इसका लूप बना लेंगे. नाउ फैक्टर्स ऑफ 32 में 4 है बट 24 में नहीं है. इसी तरह 8 फैक्टर्स ऑफ 24 में नहीं है. 16 फैक्टर्स ऑफ 24 में नहीं है. 32 फैक्टर्स ऑफ 24 में नहीं है. तो 4 है. 4 भी हमारा कॉमन फैक्टर है. हम इसका भी लूप बना लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर्स 1, 2 एंड 4. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द HCF. इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 4. सो वी विल राइट 4 हेयर. द HCF विल बी 4. स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट की है. B पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करेंगे. एंड क्वेश्चन B part is 50 and 25. Next part is question number 6, A and B. Find the common factors and HCF of each of the following sets, 9, 12 and 15. It is part A. स्टूडेंट्स, इसमें क्या फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है. पहले हमने 2 नंबर्स के HCF निकाले थे. अब हमारे पास 3 नंबर्स के पेयर हैं और हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबके फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे वन बाय वन. देन वी हैव टू लुक फॉर द कॉमन फैक्टर्स. We will make a loop of that numbers and after that we have to look for the highest common factor. Okay, so first factors of 9 are 1, 3 and 9 because 9 is multiple of these numbers, so these numbers are factors of 9. Then factors of 12,
1, 2, 3, 4, 6 and in last 12. Factors of 15 in 1, 3, 5, 15. Now students, look for the same numbers in all of the factors of 3 numbers. Clear? Now 1 is same in all of the factors of 3 numbers. Then 3, yes, 3 is same. After that there is nothing same in all of the factors of given 3 numbers. Clear? So 1 and 3 are the common factors. Clear? And 3 is the highest common factor, so we will write HCF is equal to 3. And our next part B, is 5, 25 and 35. You have to do this part exactly like I did part A now. And for today our homework is page number 38, question number 5 C and D, and question number 6 C and E on sheets. ये सारा का सारा काम स्टूडेंट्स आपने शीट पर करना है और नीटली करना है, और एक्स्ट्रा वर्क आपने कोई भी नहीं करना. जितना आपसे कहा गया आपने उतना ही करना है, और यही काम आपने मंडे को सबमिट करवाना है. क्लियर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स. सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.